हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे और सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा ही हो रहा होगा। कुछ दिन पहले हमने सीखा था ग्रिड्स बनाना। ये वही ग्रिड है जो मैंने उस समय सिखाते समय वीडियो बनाया था। ये वही ग्रिड है। आज हम इस ग्रिड के हेल्प से मंडाला बनाएंगे। और मंडाला बनाने के पहले, क्योंकि ये पेज ब्लैंक है, तो हम इसमें एक बैकग्राउंड बनाना सीखते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड में थोड़ा सा क्योंकि ब्लैक के अगेंस्ट वाइट वैसे तो अच्छा ही लगता है, लेकिन बैकग्राउंड बनाने से वो लुक थोड़ा और एनहांस हो जाता है। तो पहले हम इसका बैकग्राउंड बनाएंगे, बैकग्राउंड कलर करेंगे और उसके बाद हम मंडाला बनाएंगे इसमें। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें टेपिंग कर ली है। ठीक है, अब मैं इन कलर पेंसिल से, फेबर एंड कैस्टल के कलर पेंसिल से इनको कलर करूँगी और बैकग्राउंड रेडी करते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे हम, देखिए ये सेम शेड्स हैं, राइट। ये तीनों सेम शेड्स हैं, पर्पल के ही अलग अलग लाइटर डार्कर शेड्स हैं। तो इससे क्या करेंगे, हम ऑम्ब्रे इफेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सेंटर का करती हूँ ताकि आपको इजी हो जाए, दिखने में इजी हो जाए। देखिए, इसको मैंने कलर कर लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा ब्रश लेना है। ठीक है, इसको हमें वेट करना है। ठीक है, और लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि एक्सेस जो वाटर है वो हमें रिमूव करना है। और हमें जो ब्रश की मूवमेंट करनी है वो हमें लाइटर से डार्कर शेड पे करनी है। और हमें इसे बहुत आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, धीरे धीरे करना है। ठीक है, और कभी भी उल्टा ब्रश नहीं लेके आना है कि डार्कर से हम लाइट पे नहीं आएंगे, हम लाइट से ही डार्क पे जाएंगे।
देखिए इसी तरह हमें सारे सेक्शंस को कलर कर लेना है, ठीक है। देखिए फ्रेंड, ये सूख गया है पूरी तरह से, कम्प्लीटली ये ड्राई हो गया है, ठीक है। चलिए अब इसमें हम मंडाला बनाना स्टार्ट करते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, ये ब्यूटीफुल सा मंडाला बन के रेडी हो गया है। सिंपल मंडाला है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाया मैंने इसमें, जल्दी जल्दी बना लिया, लेकिन ये रेडी हो गया है। Thank you for watching, and please do visit my other videos, and if you like this, please like, share and subscribe.